हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक ऐसे का। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। और भी ऐसे के टॉपिक्स की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बनाई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप लेटर राइटिंग कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट लेटर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा कम लगे तो आप उसको इंक्रीज़ कर लेना, उससे आपकी वीडियो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर ऑन 15th August 1947. From that time, Independence Day is celebrated with great enthusiasm in every part of the country. This is a red letter day in the history of India. Delhi, being the capital city, special function is held here. The main function is held at Red Fort. Prime Minister of the country unfurled the national flag from the ramparts of the Red Fort. The whole place in front of Red Fort and adjoining park looks neat and clean. Loudspeakers are installed at various places. Police arrangement is made in control to control public. A tight security arrangement by military personnel is also made. A good sitting arrangements for sitting of VIPs is also made. On reaching of the Prime Minister on the Red Fort, the whole place resounds with the slogan Bharat Mata Ki Jai. Then the Prime Minister unfurls the national flag. It is followed by national anthem. 21 gun salute is also given. After these ceremonies, Prime Minister delivers his speech. He highlights the achievement and progress made by the country in different fields. He also tells the public about the problems which the country is facing. He asks the people to stand united under the national flag and forget their petty difference for the development of the country. He also cautions the people against communal forces and terrorist activities. After the speech, Prime Minister repeats Jai Hind three times each time, followed by large crowd gathered to watch the function from Delhi and nearby places. Then the school children sing national anthem and the function comes to an end. People celebrate the function in their own way. As there is a public holiday, the children and youth fly kites. Multicolored balloons are released, blue, white, and green. In this way, the national festival is celebrated. और इसमें आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे लाइंस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट आपने देखा होगा स्टेट्स की झांकियाँ निकलती है, उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और जो डिफरेंट स्कूल्स हैं देखे होंगे आपने, उनके द्वारा बहुत सारे डांस और ये सब भी होते हैं। रोड शो देखा होगा आपने। और जितने भी आर्म फोर्स हैं, डिफरेंट आर्म फोर्स हैं, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स की, तो ये सब अपने करतबबाजी भी दिखाते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लास्ट में आप इस ऐसे को आप कंक्लूड कर दीजिए अपने ओन वे में, जिसमें आप 4 से 5 लाइन कंक्लूज़न के लिए इनफ है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको हेल्प हुई होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करिए। बिल्कुल लाइक करने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करिए। और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बाकी इससे और भी ऐसे रिलेटेड वीडियोस को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, इसका लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन।